Good afternoon, everyone. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. This class, Good afternoon, sir. sir. Good afternoon. Good afternoon. इस क्लास में आके मजा आता है. Thank you, sir. वो क्या करा? Good afternoon, sir. Good afternoon. बाबू मेरा खाना गुड लेके आफ्टरनून सर. मम्मी जी डांट रही हैं. हाँ. अरे चुप चुप बोल रहा है. आफ्टरनून सर. हाँ, मम्मी जी डांट सुन रहा है, साथ में पढ़ाई भी कर रहा है. गणेश क्यों डांट सुन रहे हो भाई? सही है, सही है. तुमको डांटे सैफरॉन हम? क्या हुआ, क्या हुआ? सैफरॉन को थोड़ा पकड़ के रखना पड़ता है, नहीं तो वो हाथ से बेकाबू हो जाता है. नहीं, तो प्यारा बच्चा है बेचारा. अच्छे अच्छे सर क्वेश्चन. चमड़े की चप्पल उसको सुंगानी पड़ती है बार बार. देखो जी, टांग खींच रहा है तुम्हारी सैफरॉन. सही है. ठीक है सर. ओके. टिल्टिंग ड्रिफ्टिंग समझ में आ गई? शुरू करें क्लास के नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. यस सर. समझ में आ गई या नहीं? आप पढ़ाएंगे समझ में नहीं आएगा. नहीं, वो तो तुम बताओगे. गौतम भाई बहुत हार्ड. गौतम भाई बहुत हार्ड. क्या बात है गौतम भाई. एक ही दिल है गौतम भाई. कितनी बार जीतोगे? अच्छा. ओके, get back to serious business now. So we understood tilting and drifting. What is this? We are basically trying to talk about कि spin axis कैसे behave कर रहा है. Remember, हमने अब इसको छोड़ दिया. ये अपना घूम रहा है, काम कर रहा है. इसका काम क्या था? रोटर का क्या काम है? रोटर का क्या काम? घूमना. घूमना. घूम के क्या करता है? घूमता है तो क्या होता है? घूम के सर वो मूवमेंट होता है सर. मूवमेंट होता है, टर्न होता है. घूमना तो मूवमेंट को ही बोलते हैं. खास तरीके से घूम रहा है तो मूवमेंट ही तो है. लेकिन इस घूम करके कर क्या रहा है ये? जायरोस्कोपिक इफेक्ट कर रहा है सर. इनर्शिया, रिजिडिटी इन स्पेस, है ना? रिजिडिटी इन स्पेस इज व्हाट इट इज प्रोवाइडिंग. और उसे के चलते ये नाच रहा था. रिजिड था स्पेस में, तभी तो नाच रहा था. ये ऐसे ऐसे घूम रहा था. हाँ सर. तो अब हम स्पिन एक्सिस की बात कर रहे हैं. एक स्पिन एक्सिस का एंड ऊपर गया, दूसरा नीचे गया. इस तरफ नॉर्थ की तरफ है, ये साउथ की तरफ है. किसके बारे में? ये ऊपर गया या नीचे गया? नीचे गया सर. नीचे गया ना. पीछे से नीचे गया ना. नीचे गया ना. साउथ वाला नीचे गया ना. तो ये तो ऊपर गया सर. ये ऊपर गया. Yes, तो हम क्या बोले कि स्पिन एक्सिस नीचे है या ऊपर है? क्या बोले? ऊपर है सर. So ऊपर. We always talk about the north end. We don't talk about the south end. यस सर. Yes, ठीक है. sir. मैं किसकी तरफ देख रहा हूँ? हमारी तरफ से. हमारी तरफ से. क्यों? अगर हम ये रेफरेंस लेके चले तो मैं उस तरफ को ना देख रहा. हम किस तरफ को देख रहे हैं? आँख से रेफरेंस लेते हैं. किस तरफ? जिस तरफ हेड करते हैं सर उसी तरफ. एग्जैक्टली. तो वो रेफरेंस लेते हैं ना. एक रेफरेंस ले लिया ना कि आँख जिस तरफ होगी उस तरफ देखने की बात करेंगे. यस सर. यस सर. यस सर. मैं तो अपनी टिक्की के बारे में अगर बात करता कि जिधर टिक्की रहेगी उसके ऑपोजिट देखते हैं, तो भी वही बात है. तो यहाँ पे जिस तरफ नाक है उसी तरफ की बात करते हैं कि ऊपर है कि नीचे है, कि लेफ्ट है कि राइट है. दूसरे को हम टिक्की मानते हैं. ये वाला टिक्की वाला एंड है जिसके बारे में बात नहीं करते. ये नाक वाला एंड है जिसके बारे में बात करते हैं. सिंपल एज दैट. ये ऊपर देखा, ये नीचे देखा, ये इस तरफ देखा, उधर देखा. क्या नाक जिस तरफ है उधर कोई बात कर रहे हैं ना? यस सर. जिधर नॉर्थ है उधर ही बात कर रहे हैं. यस सर. नॉर्थ एंड इसका नाक है, उसी की बात करें. ये नाक ऊपर, नाक नीचे, नाक लेफ्ट, नाक राइट. We always talk about this, the north end, the nose end. Agreed?
Yes, sir. Yes, sir. All right. Now we will see how the behavior of the compass or not compass. अभी तक compass का C भी हमने नहीं पढ़ा है. Compass नहीं है अभी सिर्फ हमने gyroscope पढ़ा है, free gyroscope पढ़ा है और उसके बारे में देख रहे हैं. So now I am going to represent this rotor. आप मान के चलिएगा कि हाँ रोटर है. मैं एक पेंसिल या पेन लूंगा, इजी होता है मैनिपुलेट करने में. तो now I am replacing this with a pen. यहाँ पे जो रोटर था उसकी जगह हमने स्पिन एक्सिस ले लिया. रोटर घूम रहा है, उसका काम खत्म. We know that the spin axis is going in a circular way. अगर ये north end है, जो tip वाला है, जो north end है, then we talk about कि it is going in a circular path. This circular path can be like this, can be like this, can be like this, but it will be circular path all the time. So let's see the behavior of the spin axis of the gyroscope when we are putting it onto the earth. So bring the earth. Earth को लेके आएंगे. So here is this earth. The first case that we are taking is the spin axis is on the equator. What is equator? Everybody knows? Anyone who has any doubt about equator? What is equator? Equator. All clear? Yes, sir. Okay. So now this is the earth, the center point of it. The line which divides one north part and the south part is the equator. So we are keeping it on the equator. The gyroscope spin axis is on the equator, or gyroscope is on the equator. Location number 1 at equator. You can write down also. जो मोटे मोटे points निकल के आएंगे, you can jot it down in one-liner notes. Location, equator. Situation of the spin axis, it is horizontal. It is horizontal to this or not? ऊपर नीचे तो नहीं है. It is horizontal. On equator, it is horizontal. The spin axis is horizontal and aligned to the meridian. Is that correct or not? Yes, sir. Horizontal, parallel to the surface of the earth and aligned with the meridian. Is that okay? साथ साथ में हाँ ना बोलते चलो. Yes, sir. Okay. So first sir. condition, is the earth rotating like this from west to east side? Is the Yes. earth rotating like this? Sir. 24 घंटे में एक चक्कर. So when it is here, it is also moving. Now since it is rotating, the rotor is providing gyroscopic inertia. It will be rigid in space. Correct? Yes, sir. Now, Yes, sir. where is the gyrostar right now? Wherever it is इधर ही point कर रहा है. pointing, North Pole. point कर रहा है इसका नॉर्थ एंड. उधर में सर gyrostar ऊपर है. नॉर्थ का पॉइंट नॉर्थ ऊपर है होगा. हाँ सर. एकदम सही बात. वहां पे इधर को पॉइंट कर रहा है ऊपर को, तो नॉर्थ स्टार या जायरो स्टार वहां पे. As it is moving like this, it will continue to point there itself or not? It Yes, is sir. continuing to point there itself. The difference between the Earth's radius or diameter is not going to make much of a difference to the distance of star. This radius, diameter of the Earth produces no effect. इधर से इधर को हो गया, इधर से इधर को हो गया, ऐसा नहीं. इतना दूर है कि both lines are parallel. So
are we seeing any kind of movement of the spin axis with respect to the earth? Is there any change in the drift angle? Is there any change in the tilt angle? No, sir. No, sir. So on equator, location 1, equator, situation 1, when the spin axis was horizontal and aligned to meridian, what tilting and what drifting are we seeing? Zero. Repeat. Zero, sir. Nil. Nil. Very Nil, good. sir. No tilting, no drifting is observed in the spin axis if it is located at equator and when it is horizontal and aligned to the meridian. Next case, on the same equator, but this time the spin axis in a different situation, horizontal and aligned east-west. So again on the equator, again horizontal, but this time aligned east-west. So what is the azimuth angle now? 90 degree. 90 degrees. Sir, sir. 90 degrees. पहले अलाइन टू मेरिडियन जब बोला था तो azimuth angle कितना? Zero. 0 degree. Zero. So और ये लैटिट्यूड का वैल्यू कितना था इक्वेटर पे? Zero. 0 sir. Zero. तो जो पहला कंडीशन हमने देखा था in which there the latitude was 0 degree and azimuth also was how much? 0 degree sir. Zero degree. Zero. In that case we saw tilting was 0, drifting was 0. Now what is the latitude again in this condition and azimuth angle? 0 sir. 90 degree. Sir, इसमें 90 डिग्री होगा ना सर? 90 degree, sir. East. Latitude 0 degree, azimuth angle 90 degree. Azimuth is 90 degree. Very good. Yes. Now where is the gyro star? सर ईस्ट साइड पे, सर ईस्ट साइड पे. सर को है gyro star? हाँ, sir. Imaginary star Yes, है, तो sir. zero पर शुरुआत Yes, कर रहा है, वहीं पे star है. So will it continue to point there itself or not? Yes, sir. Yes, sir. Right now it is horizontal. See, it is horizontal. As the earth is rotating, will it maintain the same orientation? So from here to here, when it came from here to here, is it becoming horizontal to vertical? Yes, sir. Yes इस पे sir. खड़ा हो गया ना, पहले जो यहाँ पे था, अगर आपने देखा हो तो ये हॉरिजॉन्टल था, सरफेस के बराबर था, but as it is moving, what has become in 6 hours? Horizontal sir. हॉरिजॉन्टल हो गया. ये हॉरिजॉन्टल आप मेरे से मत देखिए, अर्थ से देखिए. Vertical. एक आदमी जो खड़ा होता है, मान लो आप खड़े हो यहाँ पे, तो ऐसे खड़े होगे, सिर ऊपर. दूसरा आदमी जो खड़ा है साउथ पोल पे, वो ऐसे खड़ा होता है, तो ये सिर के बल खड़ा है क्या? नहीं सर. No, sir. Pair. नहीं सर. एक अगर 3 आदमी खड़े हो तो एक यहाँ खड़ा होगा ऐसे, एक ऐसे खड़ा होगा, एक ऐसे खड़ा होगा. सबके पैर नीचे ही है, सिर ऊपर है आसमान की तरफ. मतलब Yes, ये sir. यहाँ भी वर्टिकल है, Yes, sir. यहाँ भी वर्टिकली खड़ा है, यहाँ भी वर्टिकली खड़ा, यहाँ भी वर्टिकली खड़ा, यहाँ भी वर्टिकल खड़ा, ये भी वर्टिकल, ये भी वर्टिकल, ये भी वर्टिकल. अगर सोया है तो यहाँ पे भी सोया है, यहाँ पे भी सोया है, यहाँ पे भी सोया है, यहाँ सोया है. Understood? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. So when we say it is horizontal here, why? Because it is level with the ground. The gyro star is there, so it must continue to point there itself. When it is coming here, what has happened? Sir, Is it tilt still- 90 degree. So tilt is 90 degree. That means it has become 90 vertical. डिग्री सर. Yes, अब sir. यहाँ से जब इधर को आया तो इसी कंडीशन में आ जाएगा वापस. Yes sir.
That means it is Yes, sir. horizontal once again. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Then it is going further. It will come in this situation. Yes, sir. Yes, sir. This into the ground. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Negative tilt, and when it completes here, it comes back to the same situation. So from here to here, the north end was lifting above the ground, perpendicular हुआ और फिर से ground बराबर आ गया. यहां से यहां तक में negative tilt, यहां से यहां तक में positive tilt. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. यहां से 0 डिग्री, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 90 डिग्री यहाँ. फिर 90 डिग्री से कम 80, 70, 60, 50, 40, 20, 0 डिग्री यहाँ पे. यहां से फिर 10, 20, 30 डिग्री बट नेगेटिव इनटू द ग्राउंड, 90 डिग्री माइनस. फिर कम होना शुरू हुआ, -80, -70, -60, -40, 30 एंड फाइनली 0 डिग्री. So what are we seeing? Did we in this movement, what kind of movement we saw? We saw tilting or drifting? Tilting. Tilting. It was Tilting, lifting sir. up. Tilting, sir. But what happened to the azimuth angle? Was there any change in the azimuth angle? No, sir. No, sir. That means drifting. Changing. Yes, sir. That means drifting. Yes, sir. 0. 0. So do we understand that on equator in two conditions there are two kinds of observation? When azimuth angle was 0 degree, there was 0 tilting, 0 drifting. When azimuth angle was 90 degree, maximum tilting, 0 drifting. Is that correct? Yes, sir. Confused हो गए? हाँ, sir. Confused हो गए? Very good. Very good. Confused हो गए. सर azimuth बार एंगल तो वही ड्रिफ्ट एंगल था ना सर? ड्रिफ्ट एंगल क्या था? मेरिडियन से इतना एंगल था. करेक्ट? यस सर. एजिमथ को ही हम ड्रिफ्ट बोलते हैं ना. एजिमथ में चेंज को ड्रिफ्ट बोलते हैं बेसिकली. यस सर. हाँ, sir. Yes, sir. 90 डिग्री एजिमथ रखा. अब यहाँ से जब ये मान लो यहाँ से यहाँ गया तो टिल्टिंग चेंज हुई कि ड्रिफ्टिंग भी चेंज हुई? ये भी चेंज हुआ क्या? No, sir. नहीं, बट sir. सर सिर्फ tilt हुआ. नॉर्थ से ईस्ट में आया तो ड्रिफ्टिंग चेंज हुई ना. कैसे? ये तो ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग कंडीशन अभी अपने आप छोड़ा नहीं है. मैं जब घुमा रहा हूं तो घुमा के अभी पकड़ा हुआ मैंने रोटर को, अब यहाँ पे घुमा के और छोड़ दिया. यस सर. Now when earth motion is happening, it is going in this direction. Is the drift angle changing? Is it any time changing any angle with respect to the meridian? नो सर. It is always remaining at 90 degree only ना. जो 90 डिग्री Yes. लेके चलते थे बात में, वही पूरे सर्किल में है ना 360 डिग्री में. इसमें तो चेंज ना हुआ. हाँ, sir. Yes, sir. नहीं, sir. हाँ. अगर यहाँ से 90 से 100 जाता या 80 जाता, 70 जाता, तब ना हम बोलते कि ड्रिफ्टिंग हो रही है. Yes, sir. लेकिन वो तो नहीं हुआ. ये 90 पे रखा था, ये 90 पे रहती है. करेक्ट? Yes, sir. यस. Yes, sir. इस ऑब्जर्वेशन में क्या क्या चीजें हमारी इनपुट है? फर्स्ट वन वाज इक्वेटर. सो लैटिट्यूड हाउ मच? 0. Degree. And then we had azimuth angle which was 0 degree and 90 degree. दो condition. Yes, sir. यस सर. When latitude 0, azimuth 0, तो tilting 0. Drifting Yes, भी sir. 0. When latitude 0 degree, azimuth angle 90 degree, तो मैक्सिमम 15 डिग्री पर आवर की रेट पे टिल्टिंग हो रही है. हाँ, Yes. sir. तो अगर सिर्फ टिल्टिंग को देखें, टिल्टिंग को अगर देखें तो
0 डिग्री पे मैक्सिमम टिल्टिंग होती है गिवन कंडीशन में, मतलब मैक्सिमम वैल्यू हमें ट्रिग्नोमेट्री में किस फंक्शन पे मिलता है 0 डिग्री पे? cos 0 cos 0, मतलब टिल्टिंग को कुछ लेना देना है cos 0 से, लैटिट्यूड cos ऑफ द लैटिट्यूड से लेना देना है। लेकिन इसी लैटिट्यूड पे cos 0 डिग्री लैटिट्यूड पे when azimuth was 0 we got 0 tilting, when azimuth was 90 we got maximum. So which function gives you this value? 0 at 0 degree, maximum at 90 degrees? Sine. Sine. That means this tilting is also a function of sine of the azimuth angle. Yes, sir. That means tilting is equal to, और maximum rate क्या है? 15 डिग्री. So 15 डिग्री का full rate मिलता है when the latitude is 0 degree and azimuth angle is 90 degree. Is that correct or not? yes So tilting TG is equal to 15 degrees cos latitude sine azimuth per hour of time. Write down this. Write down, take a look at the formula. Write it down, take a look, think about it. See here, see the formula. Repeat. See here, see the formula. Again and again 3 times. And try to comprehend what we are saying. The tilting. So एक बार repeat कर perform. Tilting TG सर is equal रिपीट कर to, दीजिए। tilting TG is equal to 15 degrees cos latitude, latitude को lambda लिख सकते हैं, Greek letter lambda, Okay. cos latitude sine azimuth AZ per hour of time. Sir, sine azimuth. Per hour of time slash करके per hour. and sir ये ड्रिफ्टिंग कब मैक्सिमम होगा? अभी देखते हैं ना, आगे और देखेंगे, ओके आगे और देखेंगे। ड्रिफ्टिंग तो हमने देखा कि ड्रिफ्टिंग इस लैटिट्यूड पे, इस केस में भी ड्रिफ्टिंग 0 थी, इस केस में भी ड्रिफ्टिंग 0 थी, यस और 0 वैल्यू मिल रहा है कहाँ पे? लैटिट्यूड कितना? 0. लैटिट्यूड 0 किसी भी कंडीशन में मुझको 0 ही मिली। दैट मीन्स ड्रिफ्टिंग हैज टू डू समथिंग विद द लैटिट्यूड, साइन ऑफ द लैटिट्यूड। Yes, sir. हाँ सर वही इक्वेटर केस से में थोड़ा अलग होगा। ऐसे ही केस में यहाँ पे 0 डिग्री लैटिट्यूड पे 0 ही मिला मुझको, मतलब साइन लैटिट्यूड का कुछ फंक्शन है, होता तो 15 डिग्री पे ही होगा, लेकिन चूंकि लैटिट्यूड 0 है तो 0 मिला, चाहे अज़ीमुथ ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, चाहे ऐसा हो। करेक्ट? अगर इस एंगल पे भी होता तो ऐसे ही जाता। अज़ीमुथ एंगल तो वैसे की वैसे ही रहती। Yes, sir. अगर ऐसे होता, यहाँ पे रखते तो ऐसे चलता, इसमें भी एंगल वैसे ही रहता, बार बार घूम के वैसे ही आता, क्योंकि ये तो हमेशा उधर को देखता रहेगा। यस सर। Yes, sir. तो 0 डिग्री लैटिट्यूड पे हमेशा अज़ीमुथ, सॉरी 0 डिग्री लैटिट्यूड पे ये 0 ही होता है। ड्रिफ्टिंग इज 0। दैट मीन्स ड्रिफ्टिंग इज ए फंक्शन ऑफ साइन ऑफ द लैटिट्यूड, क्योंकि साइन तो 0 डिग्री तो 0 ही मिला हमेशा। Yes, sir. यस जितनी सर। कंफ्यूजन हो रही है, अगर कुछ कंफ्यूजन हो रही, जो हो रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे जैसे आगे चलेंगे ये बार बार रिपीट होगा, बार बार हम फिर से समझेंगे, बार बार हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। लास्ट क्लास जाते जाते हम सब कील बिठा देंगे, सब अपनी जगह पे, सब कुछ फिक्स हो जाएगा। सो डोंट वरी अगर थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है। अगर पूछना चाहते हो तो कुछ पूछ लो, मैं रिपीट कर दूंगा, नहीं तो आगे भी चलोगे तो भी आगे ये सब रिपीट होता चलेगा बार बार, और मैं आपसे पूछूंगा तो ये समझे, आप बोलोगे नहीं सर कंफ्यूज हो गया, तो फिर इस पे बात करेंगे। Okay, sir. चलेगा। ठीक है? Yes, सो sir. डोंट बी वरीड अगर समझ में नहीं आ रहा।
पूछना चाहते हो अभी पूछ लो, अभी रिपीट करेंगे, बाद में पूछोगे फिर से रिपीट करें। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट सिचुएशन इज, पहले यहां पे रखा था इक्वेटर पे, इक्वेटर पे रखा था, लोकेशन इक्वेटर, लैटिट्यूड 0 डिग्री। सिचुएशन बताओ स्पिन एक्सिस का, एक्सप्लेन करो सिचुएशन। सर 0 रहेगा, ऊपर वो पॉइंट कर रहा है तो क्या 0 रहेगा, खाली 0 रहेगा मत बोलो ना। लैटिट्यूड 0 रहेगा सर। अजीमत तो 0, लैटिट्यूड 0 रहेगा और अजीमत भी 0 रहेगा। टिल्ट और अपना 0 रहेगा। एंगल भी 0, वेरी करेक्ट। टिल्ट नाउ एंड इस ड्रिफ्ट 0। सिचुएशन में, अच्छा इस सिचुएशन में ज़ीरो स्टार कहाँ है? सर ऊपर नॉर्थ पे नॉर्थ। सर। ओके, अब हम यहाँ से सेकेंड लोकेशन पे लेके जाते हैं इसको, वी टेक इट टू द पोल्स। इक्वेटर पे था, अब हम पोल पे लेके गए इसको। अर्थ घूम रही है, स्पिन एक्सिस कुछ बिहेवियर दिखा रहा है विद रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ द अर्थ, एनी चेंज इन द एंगल, टिल्टिंग? नो सर, नील नो सर। नील नील रहेगा। नील। मतलब यहाँ पे भी when the situation of this is vertical at the poles, still no change in the tilting or drifting. There is no tilting, no drifting. Earth is rotating like this. It is happily looking at the North Star, which is there. It also keeps on looking rigid है, rigidity में अपना it is looking there. So the second condition, second location at poles. First situation A, gyro spin axis vertical. What is your observation? Tilting and drifting, what is the behavior? Tilting and drifting. What is the behavior? How much tilting, how much drifting you are seeing? 0 sir. No, Zero. नील Zero, sir. drifting. 0। No tipping. If it was here at the South Pole, if it was here at the South Pole, what behavior will you see? 0. Nothing Zero, sir. sir. 0 sir। Where is the gyro star? South sir. South, sir. My pocket here. Yes sir. यस सर। Okay. So when at poles there is no tilting, no drifting when the spin axis is vertical. Latitude 90 degree. The condition vertical. It will be 90. No tilting, no drifting. Next case compare करते हैं यहाँ से. It was aligned east-west. Yes. यस सर। The same thing we take you to the poles. यहाँ पे what was your observation? Tilting, drifting में? सर 90 डिग्री था। Only tilt was there. Drift. Azimuth Tilt angle Tilt 90 is maximum. degree. Tilt Azimuth is angle maximum. 90 Drift is degree 0. Here we saw tilting to be full at 15 degrees. 24 घंटे में एक चक्कर पूरा हो रहा था या नहीं? Yes, sir. यस सर। Yes. Happening at 15 degrees. Yes. Drifting was 0. Yes, sir. Now we are taking this in the same condition here. So at poles, second condition, this is horizontal now. Horizontal, that means at poles and horizontal. Now Earth is rotating like this. Is this the gyro star there? Yes. Yes, sir. Horizon pe hai. When Yes, it is sir. rotating, what kind of movement are you seeing? Any tilting happening here? No, No, sir. sir. No, No, sir. sir. Are you seeing any drifting? No sir. नो No, सर। sir. Why not? अगर आप इसको घुमा रहे हो ऐसे, Drifting तो ये तो नहीं घूम रहा, लेकिन Yes, अगर sir. इसको रोकते हैं, Drifting है. अर्थ को रोकते हैं, तो ये ऐसे घूम रहा है कि नहीं? Yes, sir. हाँ सर। एक चींटी जो बैठी होगी यहाँ पे,
वो इसको घूमते हुए जाते हुए दूर जाते हुए देखेगी कि नहीं? Yes. Yes, sir. यस सर। देखेगी। That means there is, ये कितने देर में पूरा होगा एक चक्कर? 24 आवर्स में। 24 hours, 24 means- hours. That means full drifting 15 degree का ही। Yes. Yes, sir. but no tilting. ये तो नहीं उठ रहा था, जमीन से तो नहीं उठ रहा था ऊपर? Five No minutes, tilting. No tilting, हाँ, sir. नहीं सर, जमीन से नहीं उठा हुआ। Tilting, Zero, Zero, sir. sir. Maximum. Zero. drifting, 15. max. Maximum. Maximum. मैक्सिमम। Correct? 15 Understood? hours. Yes. यस सर। Yes. So in simple words, at equator, tilting is जीरो। Zero. maximum when azimuth Maximum. bending is 90 degree. Tilting Yes. is maximum at equator. Drifting is maximum at poles when the pin axis is horizontal. So in simple language, what we can say, tilting maximum at equator, drifting zero at equator. When we go to pole, मामला उलट जाता है. Tilting zero at poles, drifting maximum at equator. Sorry, at poles. Correct? Yes. So the drifting was zero at zero latitude, zero at zero latitude, maximum at maximum latitude 90 degree. That means drifting is a function of what? Latitude में क्या चीज का function है वो? Zero at zero, 90 by maximum. Sine 90. Sine of latitude. Yes. That means drifting dr is equal to, write down, drifting dr is equal to 15 degrees sine latitude lambda, sine lambda for latitude per hour of time. सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर। Drifting dr is equal to drifting dr is equal to 15 degrees 15 degrees sine latitude per hour of time. इसमें एजिमुथ का कंटेंट क्या है? कंपोनेंट में एजिमुथ क्या होगा सर? एजिमुथ क्या होगा? वेरी गुड पॉइंट. एजिमुथ एंगल तो कुछ इसमें होएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो 0 पॉइंट है. ओके, ये तो 0 पॉइंट है, इसका कहीं भी रहेगा, किसी न किसी मेरिडियन से तो अलाइन ही रहेगा. 0 पॉइंट पे है ना, तो यहाँ पे होता है तब तो इससे एंगल बन रहा है इस मेरिडियन से. लेकिन अगर यहाँ पे है इक्वेटर पे, तो यहाँ से अगर है तो इस मेरिडियन से, यहाँ पे है तो इस मेरिडियन से, यहाँ पे है तो इस मेरिडियन से, तो पोल पे मेरिडियन तो का कंटिन्यू चेंज होता रहेगा. वही तो अजीमथ एंगल नहीं चेंज हो रहा, वो बेसिकली हाँ कंटिन्यूस चेंज हो रहा है बेसिकली. और वो चेंज होकर के अगर ग्रीनविच से शुरू किया था, ग्रीनविच मेरिडियन से, तो 24 घंटे में घूम करके ग्रीनविच वाले मेरिडियन पे आ जाएगा वापस. लेकिन देयर इज नो एंगल बीइंग मेड विथ रेस्पेक्ट टू मेरिडियन, क्योंकि वो यहाँ पे है तो इससे अलाइंड, यहाँ पे है तो इस मेरिडियन से अलाइंड, यहाँ पे है तो इस मेरिडियन से अलाइंड, यहाँ है तो इस मेरिडियन से अलाइंड. सो यहाँ पे पोल पे एजिमुथ एंगल का कॉन्सेप्ट बन ही नहीं रहा. ठीक है, मतलब एजिमुथ किसी एक मेरिडियन से फिक्स्ड अलाइन होना चाहिए क्या उसके एंगल के लिए? व्हाट इज एजिमुथ एंगल? सोच के डेफिनेशन बताओ, सोच करके डेफिनेशन बताओ. व्हाट इज एजिमुथ एंगल? चेंज इन ड्रिफ्ट.
set is the angle on the rational horizon from principal to the vertical circle of that. इतना अंग्रेजी बताओगे तो मुझको कहाँ से समझ में आए? एजिमुथ एंगल अभी हमने जब लैटिट्यूड पे बात किया था, यहाँ पे जब बात किया था, हमने बात किया कि जब ये इधर को है तो एजिमुथ एंगल कितना है? सर 0 अभी कितना है? 90. तो कैसे मेजर कर रहे हो भाई? ये 90 कहाँ से मेजर किया आपने? व्हाट इज दैट मेरिडियंस एंगल? के रिस्पेक्ट पे। दिस 90 degree is because it is a sorry sir. This 90 degree in azimuth is an angle between what and what? Spin axis and what? मेरिडियन Meridian. मेरिडियन। तो बस एजिमुथ एंगल यही है ना, जो एंगल मेरिडियन के साथ बन रहा है वही। अभी कितना एजिमुथ एंगल है? 45. 45 ईस्ट, अभी 45 वेस्ट इस केस में। Yes sir. Yes sir. So Yes. azimuth angle is an angle between the meridian and the spin axis. Now when it is here at this place, is it making some angle with this meridian? Is it making, or is it aligned with the meridian, or making some angle with the meridian? Align. No sir. It is aligned with this. In this case, Making an angle, sir. again aligned with this meridian. This case, Yes sir. aligned with this meridian, aligned with this meridian. So at this is the 0 point. यहीं से सारे meridian शुरू होते हैं, तो कहीं पे भी रहे वो किसी न किसी meridian से तो aligned होगा ही। यहाँ पे ये घूमता है तो किसी न किसी meridian से aligned ही है, लेकिन यहाँ पे अगर होता है तो इसी meridian पे angle बना लेता है, क्योंकि यहाँ तो meridian ये है और इस पॉइंट पे अगर घूमेगा तो meridian के साथ एंगल बनाएगा। वही चीज अगर ये पोल पे जाए तो यहाँ पे कहीं पे भी जाए तो किसी न किसी के साथ अलाइंड ही होता है, तो यहाँ तो एजिमुथ एंगल बन ही नहीं सकता। नहीं, व्हाट डू यू से? शिफरन क्लियर नहीं है? हाँ सर, थोड़ा सा नहीं कंफ्यूजन। है तो फिर से अपना क्वेश्चन शूट करो। Shoot your question once again. If any doubt is remaining, please shoot your question once again. We'll try to address it once again. सर मतलब मेरिडियन पे एंगल बना रहा है ये, तो जब ड्रिफ्ट मैक्सिमम हो रहा है तब भी तो ये हर मेरिडियन पे एंगल बनाता रहेगा ना कॉन्टिन्यूअसली। हमने कहा बेसिकली व्हाट इज ड्रिफ्टिंग? ड्रिफ्टिंग इज the motion of the spin axis is in horizontal plane. Is that correct or not? Yes sir. Horizontal plane पे घूम रहा है कि नहीं है? Yes sir. यहाँ पे घूम रहा है या नहीं? Yes sir. तो ड्रिफ्टिंग हो रही है या नहीं? हो रही है सर। इस केस में इससे अलाइंड, इस केस में इससे अलाइंड, इस केस में इससे अलाइंड, इससे अलाइंड, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो घूम रहा है, लेकिन किसी न किसी अज़ीमुथ के साथ, किसी न किसी मेरिडियन के साथ तो अलाइंड है ही। तो यहाँ पे रोल ऑफ द अज़ीमुथ एंगल डज नॉट अराइज हियर, ओनली द लैटिट्यूड इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके सर। ठीक है? Yes sir. Sorry. So now we have understood what is the behavior of the spin axis on equator when kept 90 degree, sorry 0 degree azimuth and 90 degree azimuth. दो केस हमने यहाँ देखे, दो केस हमने यहाँ देखे, when vertical and when horizontal. अब जब यहाँ पे बीच में रखेंगे इंटरमीडिएट लैटिट्यूड, ना यहाँ ना यहाँ, तो क्या होना चाहिए? यहाँ हमने देखा कि ड्रिफ्टिंग मैक्सिमम टिल्टिंग 0, यहाँ टिल्टिंग मैक्सिमम ड्रिफ्टिंग 0,
तो यहाँ पे क्या होगा बीच में? यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे सर, ड्रिफ्टिंग एंड टिल्टिंग। सर दोनों डिपेंडिंग ऑन द लैटिट्यूड, इधर को जाएंगे तो टिल्टिंग ज्यादा और ड्रिफ्टिंग कम, इधर को जाएंगे तो ड्रिफ्टिंग ज्यादा टिल्टिंग कम। जब यहाँ पहुंच जाएंगे तो टिल्टिंग खत्म, ड्रिफ्टिंग मैक्सिमम। यहाँ पे जाएंगे तो टिल्टिंग मैक्सिमम, ड्रिफ्टिंग खत्म। साइन कॉस की वैल्यू, यस सर, that means यस at intermediate latitude we will have drifting and tilting both, यस सर। यस क्योंकि ना तो ड्रिफ्टिंग खत्म हुई ना टिल्टिंग खत्म हुई, बीच में है, तो दोनों थोड़ा थोड़ा दोनों हो रहा होगा डिपेंडिंग ऑन द लैटिट्यूड। Yes, sir. So let us say it is aligned with this meridian at intermediate latitude, यहाँ से ऊपर यहाँ से नीचे बीच में है। Starting point what? Horizontal and aligned with the meridian, correct? यस What is, where is the gyro star right now? पॉइंटिंग North. Pointing north, sir. Is it north or inclined? Inclined. Incline, sir. तो यहाँ होता ना, इंक्लाइन, inclined थोड़ा सा Yes. इस तरफ का है ना, Yes, sir. gyro star. Incline, sir. So it must Yes, sir. remain in this direction all the time since it is rigid. Yes sir. Yes, sir. तो मोशन देखो, यहाँ पे ये, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल था, यहाँ पे वर्टिकल हो गया। Vertical होगा, sir. यहाँ पे फिर से हॉरिजॉन्टल हुआ, फिर से वर्टिकल हुआ या नहीं? दैट मीन्स इज देयर एनी tilting movement happening? When it was horizontal here, it is becoming vertical, and horizontal and vertical, horizontal, that means it is moving in, or it is showing tilting effect or not. यस सर, Yes, sir. But remember that it was aligned with this meridian, इस meridian से aligned था, यहाँ पे इस meridian से aligned था। When it is going like this, is there an angle created? It is still Yes, pointing sir. there. When it is coming, see, earth is rotating, it is aligned with this meridian. It is aligned with this meridian when we start. Aligned with this meridian. Yes, sir. Now, as it is turning, do you see an angle being created here? Yes, sir. That means drifting Yes, is also happening. Yes, sir. Yes, sir. यस So, ये drifting 24 घंटे में आगे पूरा हो जाएगा। यस Yes, Yes, sir. sir. Tilting 24 घंटे में आगे पूरा हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes. How much of tilting and how much of drifting will take place? सर डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड It will depend on latitude And the azimuth angle. and azimuth. यस सर, Tilting will depend on the azimuth angle and the latitude. Latitude. Azimuth. Tilting will depend only on the sign of the latitude. Is that correct? You have written the formula. यस सर, So, three concepts now that we have seen. One concept, three different things that we have seen. How the behavior of the gyroscope on equator, at poles, and at intermediate latitude. Two conditions on the equator, two conditions on the poles, and one condition, because as a compass उसको हमेशा north की तरफ देखना है। So one condition at the intermediate latitude we have seen, there will be both drifting and tilting together happening. So now we have some 10-15 minutes time remaining. We go to the slide and go through this on the slide, what we have discussed, what we have understood. चलें? ओके सर। Yes, sir. Okay, so Yes, sir. let me open the file.
Sharing the screen. Yes, sir. Okay, behavior of free gyroscope on rotating Earth. This is what we have been talking about right now. So go through the slide one by one and tell me if you are okay. If not, please ask me. Tell me next when you have understood, when it is Yes, clear. sir. Next. Next. It is kind of repeat. पिछले क्लास में जो था उसी का रिपीट है, बट वहीं से हम आगे चल रहे हैं यहाँ पे. रिजिडिटी को ही पॉइंट ऑफ व्यू में रख रहे हैं अपने. Yes, sir. Next. Sir, next, sir. Next. This you have already read. Yes, Yes, sir. Next, sir. Yes, sir. Next. It will follow the sun from sunrise to sunset. पीछे पीछे घूमता चलेगा उसको. Next. So up to this we had seen already, correct? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. The spin axis will trace a circular path on the celestial hemisphere, celestial dome. अरे tilting and drifting. Okay, ये क्या हो गया? Tilt and drift. Okay, ये भी बात कर लिया था हमने. हाँ, now read this. Yes, sir. Next. Next. See that the spin axis is always pointing in this direction at all times. But Yes. with respect to the surface of the earth, the orientation is changing. Here it is parallel to the ground. Here it is making this angle with the respect to ground. Here again it is parallel. Here it is into the ground. Negative angle being made here. Yes. At different times, different kind of angles being created. So this is what you are seeing, tilting. This is what you are seeing is the drifting when it is at intermediate latitude. The spin axis is aligned with the meridian here. The gyrostar is in this direction. They always maintain the same direction as the earth is rotating from west to east side. While doing so, there is angle being created here with respect to the same meridian. It is A1, A2, A3 are the same meridians but at different times. Let us say 000 hours. Maybe let us say 040 hours, 0800 hours at different times. The angle that is being created here between the meridian and the spin axis, is this changing or not? Yes. So drifting is happening. Yes. Next.
This is Yes, sir. an important thing to understand and remember. Good. Yes, sir. Next. सर बहुत थे आज के लिए सर। हाँ, बस इसी को सम अप कर रहे हैं, इसी को रिपीट कर रहे हैं, आगे थोड़ी जा रहे हैं। जो हमने पढ़ लिया उसी को हम रिपीट कर रहे हैं। हाँ सर, आगे सर। So, making a clear cut picture in your mind, this and this. यस यस सर। यहाँ पे अजीमथ एंगल कितना है? सेकंड पॉइंट में अजीमथ एंगल कितना है? 90 डिग्री सर, 90 डिग्री। वेरी गुड। एंड 90 डिग्री 0 रहेगा Yes, सर। अलाइंड विथ Azimuth- मेरिडियन। जब Aligned with 0 meridian रहेगा, 0. नील रहेगा। 0 यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, क्या कर रहे हो यार? अलाइंड है, यहाँ अलाइंड विथ मेरिडियन है, यहाँ पे 90 सॉरी सॉरी डिग्री। सर, 90 डिग्री, ये ऊपर वाले में 90 डिग्री, नीचे वाले में 0। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, एट पोल्स, एक एक लाइन है क्या बस, करते हो गणेश? अरे मैंने कहा बोला। कोई बात नहीं, किसी ने बोला। At poles, when axis is vertical, what do we see? मैक्सिमम Both ड्रिफ्ट। 0. What maximum? Nothing. No Both tilting, no 0. drifting. No tilting, no drifting. When horizontal, Only drift. Only Only drift. maximum drift. Only drifting and maximum drifting. 15 डिग्री 1 घंटे में होएगा. यस And so, at intermediate places, बोथ टिल्टिंग एंड Both tilting and drifting depending Both on tilting latitude and and azimuth drifting. angle. okay. Which side tilting and which side drifting? Now we know that tilting is positive and negative, above the ground, below the ground. Drifting is positive, negative, either easterly or westerly. वो किस तरफ होगा ये तो पता है या नहीं? वो बताऊंगा अगले क्लास में। ओके सर, Thank you, sir. ठीक है? थैंक यू सर। Thank you, Just for an sir. idea, Thank you, sir. नॉर्थ हेमिस्फीयर में चुप थैंक यू सर। थैंक यू सर। रुको रुको Bye, sir. बोलने तो दो उनको। चुप सब रहो। बहुत गंदे हैं सब। क्या हाँ, बग्गा क्या thank you, कर रहा है? sir. उतने किस्तान अरे चलती है टीचर और बच्चों के बीच में, कोई सर बात नहीं। आराम से सर, हाफ एन आवर लेके बोलिए सर। अच्छा ठीक है। सो जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, आई एम जस्ट फॉर कंप्लीटिंग द नॉट कंप्लीटिंग बट जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि अगले बार क्या होने वाला है। नॉर्थ में बिहेवियर कुछ होता है, साउथ हेमिस्फीयर में बिहेवियर कुछ होता है। जो ऊपर होता है नॉर्थ में, उसका उल्टा होता है नीचे। इधर एक तरफ ड्रिफ्टिंग तो यहाँ दूसरे तरफ, यहाँ एक तरफ टिल्टिंग तो यहाँ दूसरे तरफ। दोनों हेमिस्फीयर में बिहेवियर अलग अलग होता है, ऑपोजिट होता है। We will see that in practice, हम लोग यही ग्लोब पे वैसे ही करेंगे, और we will see in practice कि कैसे how it is differently behaving in different hemispheres अगले क्लास में। Bye bye. Bye, Any questions? sir. Thank you, sir. Thank you, Bye, Have a sir. good day. बाय सर, थैंक यू सर। सबको जाना है, सबको जाना है, सब भाग रहे हैं। अब भागने दो, हम भी भागते तुम यहीं पे रहो, 5 बजे तक तुम यहीं रहो गणेश। हैं। नहीं ठीक है, चलो ओके। लैपटॉप पे पता कोई फीचर होता ना, जैसे हाथ बाहर निकालो तो शैपरॉन सबसे पहले तुम्हारे पास आता है। कल मिलते हैं।